Good morning, students. We have discussed about chapter number first in our last video, Resources of India, meaning and types of resources, soil, types, distribution and conservation. Now, today we will study about water, sources, types, distribution and water conservation. Water is a valuable resource. It fulfills our basic needs. As you know, water is a very important for human life and it is essential for human life. It also important for living beings that live on the earth. Water is the main part of the bodies of plants and animals. Human body consists the 70% of water. There are four major sources of water. यानी कि जो वाटर है उसके चार मेन सोर्सेस होते हैं. फर्स्ट सरफेस वाटर, सेकंड इज ग्राउंड वाटर, थर्ड इज एटमॉस्फेरिक वाटर, फोर्थ इज ओशन वाटर. The water on the earth's surface is derived from precipitation that comes is. There are four major sources of water. यानी कि चार प्रमुख यानी कि फोर मेजर सोर्सेस होते हैं वाटर के. फर्स्ट इज सरफेस वाटर, सेकंड इज ग्राउंड वाटर, थर्ड इज एटमॉस्फेरिक वाटर, फोर्थ इज ओशनिक वाटर. द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज derived from precipitation that comes in the form of rain and snowfall. Large amount of water flows to river where it flows into the sea and the oceans. Now we discuss these four sources of water one by one. First is surface water. The surface water is available in rivers, ponds and lakes. यानी कि जो surface water होता है वो rivers, ponds और lakes में हमें मिलता है. Rivers are the main source of सरफेस वाटर इन इंडिया. जो सरफेस वाटर है उसका मेन सोर्स हमारे इंडिया में रिवर्स है. रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर फाउंड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. देयर आर मेन रिवर्स द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र carry nearly 60% of the total surface water in India. यानी कि ये जो तीन प्रमुख नदियां हैं इन्होंने पूरे इंडिया का 60% of total surface water carry किया हुआ है. Among the major rivers of the world, the Brahmaputra and the Ganga are the 8th and the 10th place. यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है इसमें गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है उन्होंने 8th और 10th नंबर लिया है. Now we discuss some major rivers of India and its length. Indus 1134 kilometers, Godavari 1465 kilometer, Narmada 1382 kilometer and Ganga 2725 kilometer. Now next is groundwater. Some part of rainwater is soaked by the land. Only 60% reach in the upper layer of the soil, which is very useful for agriculture and vegetation. It is absent on the surface through well and tube wells and is used by human beings for irrigation purpose and industrial purpose. In our country, distribution of underground water is very uneven. यानी कि इंडिया में अंडरग्राउंड वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अनइवन है. Distribution of groundwater resources is largely affected by geographical structure, physiography and hydrology. Now in India, slow resulting in low groundwater potential in southern states like Maharashtra and Madhya Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka. Now we take our third type of source water. Now we take
Third source of water, atmospheric water. This is in the form of water vapor, therefore it is not used. And next is ocean water. This type of water is mainly used for transport and fishing industry. यानी कि जो ओशन वाटर होता है, जो वाटर का सोर्स होता है, इसका अधिकतर यूज ट्रांसपोर्ट और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए किया जाता है. In Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean in the west, north, east and south in India. Now we take our second topic, uses of water. Uses of water, as you know, what are the uses of water in our daily life? Water is used for drinking, irrigation, power generation, transport, domestic purpose, irrigation and etc. Major use of water in irrigation. We are using water for irrigation since ancient time. There are three major sources of irrigation. First is canal, wells and tube wells and tank. Now we discuss on प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि क्या प्रॉब्लम्स है और वाटर कंजर्वेशन के बारे में हम बात करेंगे. वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम्स आर मल्टीफेसेटेड, यानी कि जो वाटर की प्रॉब्लम है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सफिशिएंट वाटर वाज अवेलेबल फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्रीज, बट नाउ ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रो इट इज इनसफिशिएंट. यानी कि जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे तब एक सफिशिएंट वाटर का जो अमाउंट था वो हमारे पास था, जो खेती और इंडस्ट्रीज के काम में आता था. पर पॉपुलेशन बढ़ने के कारण अब पानी की समस्या हमें देखनी पड़ रही है. सदर्न इंडिया एक्सपीरियंस वास्ट in summer where is not in rainy season, यानी कि जो सदर्न इंडिया है वो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर चुका है. In view of the limited availability of water is increasing demand and its uneven availability. Following there are steps essential in these direction. First, to collect the rainwater and stop it from running off. Second is scientific management of water resources of all the rivers. Third is prevention of water resources from pollution. Now we take our next topic 1.4, forest and wildlife use and their conservation. Forest and wildlife. The large area of the earth's surface with dominance of the trees in the form of natural vegetation are known as forest. We can say in simple words, a large area is covered by trees is called forest. Forest are the valuable gift of nature, यानी कि जो forest है वो हमारे लिए प्रकृति का एक उपहार है. They are important natural resources. It is essential and important for human life. Natural vegetation depends on the location of an area, climate and soil. Distribution of natural vegetation is uneven because of location, soil conditions and climate and conditions are not same. According to Indian Survey Department, India about 47,000 species of plant and are found, out of the which 500 species are found only in India. यानी कि जो सर्वे डिपार्टमेंट है इंडिया का उसके अकॉर्डिंग 47,000 स्पीशीज प्लांट्स की जो है वो यहाँ पाई जाती है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड इज मानसून फॉरेस्ट, एंड there are also two types, wet monsoon forest and dry monsoon forest. Third is dry tropical forest, fourth is forest of delta region and fifth is Himalayan forest. Now we take our next topic, importance of forest to national economy, यानी कि forest का जो national economy उसमें क्या importance है. Forests are the national wealth in India. About 20.4
20.64% of total geographical area is under forest. This is 1.7 of the world's forest area. Forest is very important for human life. They not only provide wood but is also provide the variety of raw material, and it is also generate the national income. Their direct benefits are very important. अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो कि फॉरेस्ट के द्वारा हमें होते हैं. नाउ वी डिस्कस द टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट. फर्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें वुड प्रोवाइड करते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड्स मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोड्यूस large number of raw material for industries. Forests provide minerals for basic industries, grazing land for animal, employment, foreign exchange, help in the small scale industries and revenue generation. यानी कि जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है फॉरेस्ट के वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें वो बेनिफिट करते हैं कि हम अपनी जो नेशनल इनकम है उसमें ग्रो कर सकें. नाउ नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट. देयर आर मेनी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट. फर्स्ट इज कंट्रोल सॉइल इरोजन, यानी कि जो सॉइल इरोजन होता है उसे भी फॉरेस्ट कंट्रोल करते हैं. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर चेक कंट्रोल and increase water level, increase soil fertility, and it is also important for natural beauty, यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उसके लिए भी important होते हैं forest. Now we take our second topic is conservation of forest in India, यानी कि वनों का संरक्षण भारत में. British government made forest policy in 1894 in India. They established Forest Department in every state for the protection and development of forest. There were two main objectives of this policy: revenue collection and conservation of forest. यानी कि जो पॉलिसी थी उसके जो मेन दो एम्स थे वो ये थे कि वो रेवेन्यू कलेक्शन करे और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करे. Some problems of forest resources. First is decline of forest area. Second is uneven distribution of forest. Transportation problem. Traditional techniques. Decline in forest area due to urbanization and forest fire. Now in India 1950, after independence, Central Forest Board was established. New forest policy was made, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में जो सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड था उसने एक नई पॉलिसी बनाई. इट फॉर मेन पॉइंट्स वेयर फर्स्ट फॉरेस्ट एरिया शुड बी इंक्रीज्ड टू 33.3%, यानी कि जो फॉरेस्ट का एरिया है वो इंक्रीज हो. सेकेंड इज फॉर्मेशन, यानी कि जो आगे हम वनों को बढ़ाएं. एंड थर्ड इज prevention of forest, and third is forestry research, यानी कि forest के researches हों. In 1999, a 20-year National Forestry Action Program was launched, made National Forest Policy of 1988 functional for the development of the forest. Following programs have been launched. First, establishment of Central Forest Commission. Second, Indian Forest Survey Organization. Third is Council of Forestry Research of Education. Next is establishment of Woodcraft Training Center. Next, State Forest Development Corporation and Indian Institution of Forest Management. Forest Conservation Act. One Mahotsav, Social Forestry, One Tree for One Child, Joint Forest Management, Forest Fire Control Project, and etc. ये जो हमने प्रोग्राम्स देखे ये इम्पॉर्टेंट है, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन.